Hi, good morning all of you. Welcome to BS Smart Academy. এই ভিডিওরে ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଟପ୍ 25 क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करिबा ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ହାଇସ୍କୁଲ ବା OSSC ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड मानन को शेयर कर दिंतु। एथि सहित आम टेलीग्राम चैनल ले जॉइन हो जातु। जेकोसी एग्जाम रिलेटेड बा इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपण माने आम चैनल रु सर्वप्रथम पाइबे एवं डेली अपडेट होउथुवा वीडियो सब मध्य पाई परिबे। सो फ्रेंड्स प्लीज जॉइन इन आवर टेलीग्राम चैनल बीएस स्मार्ट एकेडमी। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोसेसर हैज 3 मेन पार्ट्स। ऑप्शन देखिए कौन अच्छी ALU कंट्रोल यूनिट एंड रैम। ऑप्शन 2 ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। ऑप्शन 3 कैश कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। ऑप्शन 4 नॉन ऑफ दिस। प्रोसेसर रो तीनटा मेन पार्ट कौन कौन? ALU कंट्रोल यूनिट एंड रैम। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी बाइट्स आर इक्वल टू 1 किलोबाइट? ऑप्शन देला 150, ऑप्शन 2 100, ऑप्शन 3 976, ऑप्शन 4 124। हाउ मेनी बाइट्स आर इक्वल टू 1 किलोबाइट? 124। राइट आंसर है ऑप्शन 4। हमर 124 बाइट जे 1 किलोबाइट, 124 केबी जे 1 मेगाबाइट, 124 मेगाबाइट जे 1 गीगाबाइट, 124 गीगाबाइट जे 1 टेराबाइट। नंबर 3, the dash control communication for the entire computer system। को कंट्रोल कम्युनिकेशन टा एंटायर कंप्यूटर सिस्टम रे अछि? ऑप्शन ए देला, ऑप्शन 1 देला अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन 2 देला सेमीकंडक्टर, ऑप्शन 3 देला मदरबोर्ड, ऑप्शन 4 देला को प्रोसेसर, ऑप्शन 5 देला नन ऑफ दिस। तो हमर कोटा अछि कंट्रोल कम्युनिकेशन एंटायर कंप्यूटर सिस्टम रे? मदरबोर्ड। आंसर हे जिवो, राइट आंसर हे जिवो मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच टाइप ऑफ कंप्यूटर could be found in a digital watch? ऑप्शन ए देला मेन फ्रेम, ऑप्शन 2 देला सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन 3 देला एम्बेड कंप्यूटर, ऑप्शन 4 देला नोटबुक कंप्यूटर। तो हमर राइट आंसर कौन है जिवो ना एम्बेड कंप्यूटर। एम्बेड कंप्यूटर हमर फाउंड इन डिजिटल वॉच। क्वेश्चन नंबर 5, the set of instruction which tells a computer what to do is called? the set of instruction को कौन कहा जाए? ऑप्शन 1 देला मैटर, ऑप्शन 2 देला इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन 3 देला कंपाइलर, ऑप्शन 4 देला प्रोग्राम, ऑप्शन 5 देला डिबगर। कौन कहा जाए हमें? प्रोग्राम। ऑप्शन 4 है जिवो राइट आंसर। The set of instruction which tells a computer what to do is called program. Option 4 है जिवो right answer. Question number 6, SMPS stands for। SMPS कौन stands करे एबा SMPS रो फुल फॉर्म कौन? ऑप्शन 1 देला स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन 2 देला स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन 3 देला स्टोर मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन 4 देला सिंगल मोड पावर सप्लाई। तो आंसर है जिवो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन ए 1 है जिवो हमरो राइट आंसर। SMPS फुल फॉर्म स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following converts assembly language into machine language? या भितर कोटा कन्वर्ट करिवो असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज को? ऑप्शन ए देला एल्गोरिथम, ऑप्शन 2 देला इंटरप्रेटर, ऑप्शन 3 देला कंपाइलर, ऑप्शन 4 देला असेंबलर। तो हमर राइट आंसर कोटा है जिवो असेंबलर। ऑप्शन 4 है जिवो असेंबलर।
जोटा कन्वर्ट करिबो असेंबली लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज को। क्वेश्चन नंबर 8 इन्वेंटर ऑफ WWW इज। इन्वेंटर WWW इज किए? इन्वेंटर टा किए उद्भावन करथिले? ऑप्शन ए देला बिल गेट्स, ऑप्शन 2 देला ली एन फियोग, ऑप्शन 3 देला एन रिस्केल, ऑप्शन 4 देला टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन 5 देला नन ऑफ दिस। फर्स्ट WWW रो फुल फॉर्म कौन? वर्ल्ड वाइड वेब। WWW रो फुल फॉर्म हैला वर्ल्ड वाइड वेब। तर तार इन्वेंटर किए होचंती? टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली मने रखिथिबे, टिम बर्नर्स ली। क्वेश्चन नंबर 9 the set of instruction which tells a computer what to do is called। ऑप्शन 1 देला मैटर, ऑप्शन 2 देला इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन 3 देला कंपाइलर, ऑप्शन 4 देला प्रोग्राम, ऑप्शन 5 देला डिबगर। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कौन कहा जाए पचारला? कंप्यूटर रे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कौन कहा जाए? ऑप्शन नंबर 4 प्रोग्राम कहा जाए। ऑप्शन नंबर 4 प्रोग्राम, राइट आंसर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 10 इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड थ्रू। ऑप्शन 1 देला फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन 2 देला CMOS, ऑप्शन 3 देला बाइस, ऑप्शन 4 देला बसेस। तो आमर राइट आंसर है जिवो बाइस। ऑप्शन नंबर 3 है जिवो राइट आंसर BAYS। इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड थ्रू बाइस। Number 11 which one of the following converts assembly language into machine language। को लैंग्वेज टा ये चार्टा ऑप्शन भितर को लैंग्वेज टा कन्वर्ट करिबो असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन देखिबा कोन अछि? एल्गोरिदम, ऑप्शन 2 अछि इंटरप्रेटर, ऑप्शन 3 अछि कंपाइलर, ऑप्शन 4 अछि असेंबलर। तो हमर राइट आंसर है जिवो ऑप्शन नंबर 4 असेंबलर। असेंबलर कन्वर्ट करिबो असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विथ। ऑप्शन ए देला कैरेक्टर्स, ऑप्शन 2 देला नंबर्स, ऑप्शन 3 देला मल्टीमीडिया, ऑप्शन 4 देला वर्ड्स। तो आमर राइट आंसर है जिवो नंबर्स। कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विथ नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 13 द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज। मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर कोटा? ऑप्शन 1 देला सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन 2 देला माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन 3 देला मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन 4 देला ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन 5 देला नन ऑफ दिस। द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर कोटा? ऑप्शन 1 सुपर कंप्यूटर को हमें मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर कहिबा। क्वेश्चन नंबर 14 ड्यूरिंग प्रोसेसिंग डाटा प्रोग्राम्स एंड प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन आर हेल्ड temporality in temporality डाटा प्रोग्राम्स एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन कोठी रहिबो? ऑप्शन ए देला सेकेंडरी, ऑप्शन 2 देला रोम, ऑप्शन 3 देला रैम, ऑप्शन 4 देला CPU। तो हमर राइट आंसर हैला रैम। रैम रे हमर प्रोसेसिंग डाटा इन प्रोग्राम्स एंड प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टेम्पोरारी रुहे। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, आउ रोम टा हमर हैला रीड ओनली मेमोरी, आउ CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सब ए सब फुल फॉर्म गुड़ा मन रखिथिबे। तो हमर कोटा है गला राइट आंसर रैम। रैम हैला रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 15 OCR स्टैंड्स फॉर। OCR रो फुल फॉर्म पचाला। ऑप्शन 1 देला ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन 2 देला ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, ऑप्शन 3 देला ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन 4 देला अदर कैरेक्टर रिकॉग्निशन।
तो आमर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 16 द डिवाइस यूज्ड टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन्स इज कॉल्ड एनालॉग लाइन को कौन कह जाए ऑप्शन 1 देला मॉडेम ऑप्शन 2 देला मल्टीप्लेक्सर ऑप्शन 3 देला मॉड्यूलेटर ऑप्शन 4 देला डिमोड्यूलेटर तो राइट आंसर आमर हो मॉडेम द डिवाइस यूज्ड टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन्स इज कॉल्ड मॉडेम मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 17 OCR stands for optical character recognition option 2 optical CPU recognition option 3 optical character recognition option 4 other character recognition OCR full form कौन optical character recognition ऑप्शन नंबर 1 है राइट आंसर OCR full form optical character recognition। Question number 18 CPUs and ALU consist of option A RAM space option 2 register option 3 byte space option 4 all of these CPUs and ALU consist of register option 2 है राइट आंसर CPUs and ALU consist of register। The primary purpose of an operating system is option 1 to keep system programmer employed option 2 to make computer work easily option 3 to make the most efficient use of the computer hardware option 4 to allow people to use the computer। तो प्राइमरी पर्पस कौन ऑपरेटिंग सिस्टम रो प्राइमरी पर्पस पचरला तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 टू मेक्स द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। 20 ड्यूरिंग processing data programs and proceed information are held temporality in processing data program and proceed information temporally आमर कोठी रुहे ऑप्शन 1 देला सेकेंडरी ऑप्शन 2 देला रोम ऑप्शन 3 देला रैम ऑप्शन 4 देला CPU आम समस्त जानते परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज नोन एज रोम रीड ओनली मेमोरी जोठी आमर परमानेंट सब स्टोर होगी रुहे बट आमर जो टेम्पोराली जोठी सब स्टोर होगी रुहे सब डाटा प्रोग्राम इनफॉरमेशन ताको आमे कहबा रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी ताको आमे कहबा रैंडम एक्सेस मेमोरी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग डाटा प्रोग्राम्स एंड प्रोसेस इनफॉरमेशन आर हेल्ड इन टेम्पोराली रैम आमर टेम्पोराली रुहे और परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज नोन एज रोम रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 21 recently with which company has Apple been fined for patent infringement ऑप्शन गुड़ा दीजिए सैमसंग ऑप्शन 2 देला क्वालाकम ऑप्शन 3 देला स्मार्ट फ्लैश LLC ऑप्शन 4 देला एनवीडिया। तो रिसेंटली को कंपनीटा एप्पल पेटेंट इनफ्रिजमेंट करिछि तो राइट आंसर है स्मार्ट फ्लैश LLC ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर स्मार्ट फ्लैश LLC। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विथ ऑप्शन 1 देला कैरेक्टर्स ऑप्शन 2 देला नंबर्स ऑप्शन 3 देला मल्टीमीडिया ऑप्शन 4 देला वर्ड्स। तो कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विथ numbers right answer is option number 2 numbers। question number 23 the device used to carry
क्यों डिवाइसटा क्यारी करे डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन को क्यारी करे इज कॉल्ड एज ताको कौन कह जाए ऑप्शन 1 देला मॉडेम ऑप्शन 2 देला मल्टीप्लेक्सर ऑप्शन 3 देला मॉड्यूलेटर ऑप्शन 4 देला डीमॉड्यूलेटर तो हम राइट आंसर है मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 24 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट कोटा पार्ट होउची सिस्टम यूनिट पार्ट कोटा एमानक भितर कोटा सिस्टम यूनिट पार्ट गोटे ऑप्शन ए देला सीपीयू ऑप्शन 2 देला मॉनिटर ऑप्शन 3 देला सीडी रोम ऑप्शन 4 देला फ्लॉपी डिस्क कोटा पार्ट सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टा होची गोटे सिस्टम यूनिट गोटे पार्ट। क्वेश्चन नंबर 25 dash is data that has been organized or presented in a meaningful fashion तो ऑप्शन देला स्टोरेज ऑप्शन 2 देला इंफॉर्मेशन ऑप्शन 3 देला ए प्रोसेस ऑप्शन 4 देला सॉफ्टवेयर तो हम राइट आंसर है जीव इंफॉर्मेशन।